Hi, welcome back to yet another video. This is Piyush here and welcome to the third day of the Python 40 days code challenge. Let's roll back the intro. Hi, in this video today we are going to discuss or perform one more code, and this is the right triangle solver app or program. So let's check it out कि ये इस program क्या करता है. So हम run करते हैं इसको. Okay, so welcome to the right triangle solver app. And what is the base of the triangle? So we will type the base of the triangle, that is 9.3, and height of the triangle is 4.7. So now for a triangle with base this and height this, the hypotenuse this, and triangle is this. So इस कोड में हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल का बेस और हाइट का इनपुट देना है और उस इनपुट के ज़रिए हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल. ओके, और हमें उस आंसर को 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है. ओके, दैट्स इट. दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडे. सो लेट्स डू समथिंग. मैंने प्रिपेयर किया प्रेजेंटेशन दैट दिस इज द राइट ट्रायंगल. दिस इज राइट ट्रायंगल एंड दीज आर द डायमेंशंस. दिस इज this. Now height, hypotenuse, base. Height is this, hypotenuse this, and base is this. So the formula for the finding the hypotenuse is this, that is a square plus b square is equal to c square. c is hypotenuse, b जो है वो base है, a क्या है, height है. So a square plus b square is equal to c square. अगर हमें hypotenuse find करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, under root of a square plus b square. Okay, I think you got it. So let's code this. और हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रिंट कराना है. ठीक, सो पाइथन ट्रायंगल सॉल्वर. नंबर फर्स्ट टू डू. मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप अपना एक स्ट्रक्चर बना लो कि क्या क्या आपको लिखना है. इज वेलकम मैसेज एज यूजुअल, देन टू डू यूजर इनपुट, to do for this we have finding area and height. Okay, now to do number 4, and in this we convert to 3 decimal places, and finally print the output. Okay, that's it. So now welcome message हमें print कराना है, तो print welcome to the triangle solver program. Okay, this is a welcome message. Now we have to take the input of height and base. हमें यहाँ पे क्या find करना है, hypo. Okay, so ओके डन. अगर हम इस पे देखें तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनस में फाइंड करना है और बेस और ट्रायंगल में लेना है. ठीक है, तो बेस के लिए हम क्या लेते हैं, बेस इज इक्वल टू, और फ्लोट में लेना है तो फ्लोट इनपुट व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल. ओके, एक ही बार में करेक्ट कर दिया इस बार. हाइट फ्लोट इनपुट व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. ओके, सो दैट्स इट. हमने इनपुट ले लिया. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द एरिया एंड हाइपोटेनस. सो फर्स्टली वी विल फाइंड हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज द स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और इसका मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट इस पूरे टोटल का. अब पाइथन में स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी. उसी के अंदर एक मॉड्यूल होता है दैट इज SQRT. सो इंपोर्ट मैथ, और लेट्स मूव हेयर, और हम क्या फाइंड करेंगे, math.sqrt. Okay, that's it.
नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम ख़त्म। और अब हमें इसको क्या करना है, जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा उसको हमें 3 डेसिमल प्लेस पे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, दैट इज़ राउंड। सो हाइपो को हमने कन्वर्ट किया राउंड वेरिएबल, और कितने डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करना है, वो एरिया में राउंड एरिया डेसिमल प्लेस इज 3, दैट्स इट। नाउ वी विल प्रिंट इट, सो प्रिंट न्यू लाइन। और हमें प्रिंट कैसे करना है ये एक बार देख लेते हैं। फॉर अ ट्राइंगल विद बेस एंड हाइट द हाइपोटेन्यूज इज दिस। सो हमें क्या लिखना है, फॉर अ ट्राइंगल with base and height the hypo is this, ठीक। और डॉट फॉर्मेट पहले में क्या चाहिए, बेस देन हाइट देन हाइपो, ठीक है, हाइपो, ओके। नाउ प्रिंट for a triangle with base this and height this, the area is this, dot format, first is base, this height, this area, okay, that's it। I think हमने कर लिया, it's done for this prod। और अब हम इसको करते हैं run, that is python triangle solver.py, और if I'll run this, okay, so welcome to the triangle solver program। What is the base of the triangle? So the base of my triangle is 9.5 and my height of the triangle is 8.12, okay। Now okay, so is name error here, एरिया, ओके 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 ओके, दिस इज, मैंने यहाँ पे ए मिस कर दिया। नाउ सेव इट एंड रन इट अगेन, ओके। सो व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस इज 9.5, height is 8.12। so for a triangle with base 9.5 and height 12, the area hypotenuse is 10.497 and the height is and the area is 38.57, okay। so that's it for today। आज का कोड इतना ही सिंपल सा था, मिलते हैं in the day 4। so till then take care, stay blessed, keep coding and keep smiling, goodbye।